In this lesson, we will make some simple sentences using pronouns. There are three words in Urdu language. One is hai, who, and hai. These three words we are using in present tense. While making sentences, we have to attach these three words at the end of the sentence. For example, when we are making the sentence using I or main, so in the end we will use main hoon, and then the remaining part of the sentence we will write in between. Hum mean we, hain, and remaining part we will write in between. Aap, you. आप हैं, you are. And if we are using तुम instead of आप, then तुम हो. Then वो, he or she. वो है, she is, he is, it is, ये है. These are, ये हैं. Those are or they are, वो हैं. है means, in English we call it is, and who, am, and for हैं, it is are. So is, are, am, in Urdu we call it hai, who, and hain. Is hai, am who, and are hain. मैं हूँ, हम हैं, आप हैं, तुम हो, वो है, ये है, ये हैं, वो हैं. मैं हूँ, I am. हम हैं, we are. आप हैं और तुम हो, you are. वो है, he is or she is. ये है, this is. ये हैं, these are. वो हैं, they are or those are. Now let's make few sentences. For example, there is sentence, I am American. Then
We are Americans. You are American. He is American. She is American. It is American. Or these are Americans. Those are Americans, or they are Americans. So we have some simple sentences. Let's translate in Urdu. I am American. I, मैं. I am, मैं हूँ. But who will come in the end? And American will use in between. I am American, मैं अमेरिकन हूँ और मैं अमरीकी हूँ. मैं अमरीकी हूँ, or you can use मैं अमेरिकन हूँ. There is no problem. We can use English word and we can fit English word anywhere inside the Urdu sentence. So मैं अमरीकी हूँ और मैं अमेरिकन हूँ. We are American. So we'll write हम अमरीकी हैं. You are American. तुम, if it is informal, and if it is formal and respect, then आप अमेरिकन हैं और आप अमरीकी हैं. He is American. वो अमेरिकन है. She is American. वो अमेरिकन है. It is American. ये अमेरिकन है और ये अमरीकी है. These are Americans. Again, ये अमरीकी हैं, because for plural we use हैं. Those are American. वो अमरीकी हैं. They are American. Again, वो अमरीकी हैं. Now see another sentence. क्या आप अमरीकी हैं? This is the question. Means, are you American? And answer is, it can be yes, I am American, or no, I am not American. In Urdu, when I say yes, I am American, जी हाँ. Yes mean जी हाँ. जी हाँ, मैं अमरीकी हूँ. और if you say no, जी नहीं mean no. जी नहीं, मैं
अमरीकी नहीं हूं। Or you can add one more sentence. I am English. मैं अंग्रेज हूं। मैं अंग्रेज हूं। अंग्रेज हूं। So are you American? क्या आप अमरीकी हैं? Yes, I am American. जी हाँ, मैं अमरीकी हूं। No, I am not American. जी नहीं, मैं अमरीकी नहीं हूं। I am English. मैं अंग्रेज हूं। This is my hotel. Let's deal with this sentence in Urdu. This is my hotel. ये मेरा, my मेरा, ये मेरा होटल है। And we know that मेरा is the possessive form. मैं, मेरा, मुझे। मैं is subjective form. मेरा is possessive and मुझे objective form. So ये मेरा होटल है, this is my hotel. And for we, this is our hotel. ये हमारा, और हमारा, ये हमारा होटल है। This is your hotel. ये आपका, your आपका होटल है। This is his hotel or this is her hotel. ये उसका, his और her mean उसका, ये उसका होटल है। This is their hotel. ये उनका होटल है। ये उनका होटल है। Here, hotel is masculine. So we are using मेरा, हमारा, आपका, उसका and उनका. But if we have some object which is feminine, like car or गाड़ी, so we'll use ये मेरी गाड़ी है. This is my car. ये मेरी गाड़ी है. So if I write this is my car, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी, और you can use car, car is better. ये मेरी कार है। ये हमारी कार है। This is our car. ये आपकी कार है। This is your car. ये आपकी कार है। ये उसकी कार है। This is his car. ये उसकी कार है। This is his car और this is her car. ये उनकी कार है।
This is their car. उनकी कार है. So for masculine we use मेरा, हमारा, आपका, उसका, उनका. And for feminine we are using मेरी, हमारी, आपकी, उसकी, उनकी. We can also see another example for plural, like these are my children. Children in Urdu we call it बच्चे. These are my children. Children बच्चे. So we'll say ये मेरे बच्चे हैं. These are our children. Our mean हमारे, ये हमारे बच्चे हैं. These are your children. ये आपके बच्चे हैं. These are his children or these are her children. ये उसके बच्चे हैं. Or we say these are their children. ये उनके बच्चे हैं. ये उनके बच्चे हैं. So notice one thing, that we have word मेरा, and for feminine मेरी, for plural मेरे. So मेरा, मेरी and मेरे. मेरा होटल, मेरी कार, मेरे बच्चे. Likewise हमारा होटल, हमारी कार, हमारे बच्चे, our children. Your होटल, आपका होटल, आपकी कार, आपके बच्चे. उसका होटल, उसकी कार, उसके बच्चे. And उनका होटल, उनकी कार and उनके बच्चे. So there are three formats. One is आपका, का we are using for masculine. आपकी, की we are using for feminine. And आपके, के we are using for plural. So that's all in this lesson. Thank you very much.